there was this company we were working with जो मतलब अगर मैं उनके sales के लिए project करना था to increase their sales because they were in a debt and they were going to struggle to repay that debt, right? And then the company would have to shut down. So in such a situation, when you are under the buck, वो सेल्स ऑपरेशंस ड्राइव करना, वो टीम्स में वो एनर्जी लाना कि हाँ नहीं, बिकॉज मोरल ऑफ द टीम्स यू आर वर्किंग विद इज लोअर, राइट? क्योंकि उनको भी पता रहता है कि कंपनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल एक्सेट्रा. So to drive that, to actually get those sales results, to be able to get the company to survive for 1 year, and now today that company is doing so well, उस कंपनी में जो सक्सेस होता है, you feel part of that. तो मैंने कैट दिया था और देने की कोशिश की थी, बट मेरे बाल लंबे हुआ करते थे तो मेरे को एंट्री नहीं अलाउ किया गया IIMs में. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है काम की बातें. दोस्तों, रिसेंटली मैं दो अलग अलग लोगों से मिला जो कि कंसल्टिंग के फील्ड में काम कर रहे थे. कोइंसिडेंटली दोनों ने मुझे बताया कि उन्हें अपने जॉब को एक्सप्लेन करने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कंसल्टिंग के बारे में किसी को पता ही नहीं है. तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे दोस्त ऋषि अय्यर से बात की जाए. ऋषि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के लिए काम कर चुके हैं. तो जानेंगे क्या होती है कंसल्टिंग और कैसी रही उनकी जर्नी आज के एपिसोड में. अय्यर ऋषि कल्याण या फिर ऋषि अय्यर कल्याण, क्या क्या नाम से बुलाऊं मैं तुम्हें, क्या फ्रेमिंग सही है? आई थिंक ऋषि इज गुड, बट ऑफिशियली मेरा नाम अय्यर ऋषि कल्याण है क्योंकि मैं महाराष्ट्र बोर्ड में था तो वहाँ पे सरनेम पहले डालते हैं. बट मेरे बाकी सर्टिफिकेट्स में सब इट्स ऑल ऋषि कल्याण अय्यर. कल्याण इज माय फादर्स नेम, बट ऋषि इज गुड. ओके, तो मैं तुम्हें ऋषि बुलाऊंगा. सो ऋषि, यू बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंसल्टिंग, राइट? पहले तो कंसल्टिंग ये जो वर्ड है, मुझे पहले तो पता ही नहीं था ये इस तरह का कोई काम भी होता है. ये कंसल्टिंग मुझे लगा था कि अरे हाँ, आप किसी को कंसल्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, राइट? इसका मतलब ये होता होगा. सो ये कंसल्टिंग है क्या? यार, तो कंसल्टिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है अभी आज की दुनिया में. तो यू हैव टेक कंसल्टिंग जहाँ पे टीम्स हेल्प कंपनीज टू बिल्ड अ टेक प्रोडक्ट और टू मेंटेन अ टेक सिस्टम etc. Then you have strategy consulting, that was like how to advise teams on कि आगे क्या करना है, what is the plan for the future, how to make decisions between two maybe lucrative businesses that you can run. So कौन से में invest करना है, कौन से में नहीं, that sort of stuff. And then you have some sort of like consulting on operations and consulting on HR strategy etc. Operations में you typically help companies to run their supply chain, run their factories to be better, more efficient, faster, etc. Or HR में there's people consulting around how to be better leaders. There is consulting around how to do better team management. So मतलब consulting is of very different types today, and almost every function में कुछ तरह का consulting. And जैसे तूने कहा, right, I think the word comes from there, where you help someone or you consult someone to give them more insight on the work that they're doing. But yeah, primarily these are the forms of consulting, and I was specifically involved in strategy consulting and management consulting. तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में क्या आएगा? जैसे अगर कोई एग्जांपल दे सकते हो, कोई एक सिनेरियो, जैसा अगर कोई कंपनी कुछ फेस कर रही है, सो व्हाट वुड बी द कंसल्टिंग दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग? हाँ, तो आई थिंक तीन टाइप के सिचुएशन होते हैं, राइट? वन सिचुएशन इज अराउंड कि मार्केट में कुछ चल रहा है, जैसे RBI has passed a new regulation, तो बैंक्स को अपने ऑपरेशंस ओवरहॉल करने, राइट? सम एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ ट्रिगर. इट कुड बी आल्सो समथिंग लाइक कि आज की दुनिया में a lot of customers are going digital, so how do I ensure that as a company I also have a digital face, I also have like some sort of a presence with the customer, engagement with the customer on online platforms etc. तो कुछ market driven होता है changes, कुछ companies have very specific problem statements कि हमें ये नए business में घुसना है या हमें ये नए geography में जाना है. Yeah, we found that our plants are not running at peak capacity. How can we, ensure that, we create enough demand, keep capacity ka utilization ho, etc. So there are very specific problem statements that companies have. और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब they're exploratory.
So given the sort of circumstance or the sort of evolution of things that are happening technology में, for example, कुछ exploration on कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें कोई specific problem statement नहीं होता, कुछ specific objective नहीं होता, but primarily looking for recommendations on कि how do we think ahead, how do we go and capture new markets that are emerging. So broadly that sort of thing. In a consulting engagement or a study, different companies call it different terms, but in those typically project में क्या होता है कि from the consultant side there is a team, one manager, few experts, few associates, and they work with a certain part of the function or certain function of the company to accelerate that project, right? So मान लो कि factory का you need to increase the throughput, then a team goes to the factory, identifies कि आज कैसे चल रहा है, what are the practices that are happening in the market, कौन सी नई technology है which we can use, or new materials that we can use to make things faster or cheaper or better, and फिर उसको implement करते हैं within the companies like teams on best practices, कि check क्या करना है, what are the risks, how do you make sure that you don't fall into a problem when you're making this shift, etc. Right? So वो sort of change management and that sort of almost helping the company to deliver success on one project, right? Very to put it very simply, project by project basis पे होता है. It's not typically you're not part of the company and working with them on everything they're doing. It's very specific to one particular objective or one particular problem statement. तो फिर अगर ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं, तो इसका मतलब एक कंसल्टेंट की कोई एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज नहीं होती है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सपर्टीज फिर, क्योंकि मान लीजिए आप कोई टेक कंसल्टेंसी पे काम कर रहे हैं या कोई टेक्निकल कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिस पे आपको काम करना है, और कोई कंपनी आपके पास आती है कि मान लीजिए मेरे पास अमेज़न मेरे पास आई कि ई कॉमर्स को लेके उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, राइट, दे वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. तो ऐसे में एक कंसल्टेंसी फर्म क्या करेगी, मतलब क्योंकि उनके पास हो सकता है डिफरेंट डोमेन्स के लोग हों, राइट? तो क्योंकि एक्सपर्टीज तो सबकी होगी नहीं, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स भी हमेशा नहीं आएगी, तो इस केस में कंपनीज क्या करेंगी? I think this is probably one thing that you know is a perception that people have कि मतलब consultants बाहर से आते हैं, उनका इतना ये expertise नहीं होता, and which is I think valid, because even when I used to work, right, I used to work with a lot of people who have worked in that industry for 15, 20, 25 years, right? कोई plant का head है, तो he or she knows much better कि मतलब plant के अंदर feel क्या है, what system will work, what will not work, इस rubber को ऐसे heat करेंगे तो क्या होगा versus not, right? That sort of expertise knowledge is very hard for some consultant to get in like 2 months. So it's complemented in two ways, right? One is इसलिए a lot of consulting is very client facing, right? कि client के team के साथ काम करते हो, ऐसे बाहर बैठ के एक ऑफिस में you don't draw presentations. This used to happen and still is the image of consulting in a lot of minds, right? कि कोई ऑफिस में बैठ के slides बना के then you are coming and presenting the slides and that is the work done, right? Consulting today has changed a lot to client के साथ काम करना and to gain that knowledge and to be able to structure it and to be able to utilize it by comparing with external environment, by comparing with बाकी companies क्या कर रहे हैं, etc. To do that analysis quickly, you use that domain expertise. And the second thing is a lot of, like as I said, right, एक manager होते हैं, associates होते हैं और कुछ एक दो experts होते हैं हर team में. तो वो domain specific experts होते हैं. They will have industry knowledge. They will understand कि अच्छा what are the dynamics at play, market में कैसे sales होती है, they have that understanding of that particular industry very well, जो फिर team उससे learn करके you then identify new opportunities. But at the same time, I feel that's also one of, while it feels like something that you'll be always like figuring कि हाँ मतलब मेरा expertise क्या है, it is the second skill that gets developed in that is to be able to tackle new problems and like very different types of problems very quickly, right? So you never feel that this problem is something I've never seen before, because every problem that you see is something you've never seen before in a way, right? So that skill set gets developed कि तुम
you are able to absorb knowledge from experts, be able to work with clients who understand it very well, and customize solutions. So there is this way of thinking and structuring and analytics ka part jo aa jata hai, that the team excels at or does much quicker, and that is where the horsepower comes in. And then apart from that, it is about understanding the knowledge and driving the solution so that it is successful in this case. Because जहाँ पे मतलब it's not also the same thing as saying कि यार मतलब 5 जगह पे ये चल रहा है तो ऐसे उठा के copy paste कर दो तो यहाँ चल जाएगा, right? It doesn't generally work that way. To be able to identify कि यहाँ पे क्या differences है, it could be cultural differences, it could be constraints on resources, it could be constraints on money. तो वो सब navigate करके how do you customize the best solution that delivers the most success for the company, right? So that sort of thinking is where the consultant excels. So how do clients take it? Because you are coming as an outsider, right? So ये चैलेंज होता होगा. मे बी जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऐसा सोचता होगा कि हाँ वी डू नीड समबडी फ्रॉम आउटसाइड टू लुक एट इट. बट तुम जब जाते होंगे कंपनी के अंदर ऑफिस में जाते होंगे या फैक्ट्री पे जाते होंगे या जो भी उनका प्लांट है वहां पे जाते होंगे, तो डज इट बिकम चैलेंजिंग तुम्हारे लिए उन सब लोगों के साथ वर्क करना बीइंग एन आउटसाइडर? तो I would say yes and no. So challenging initially hai, because you are also like, if you think about a normal like regular job versus a consultant's job, going into the same office every day, seeing the same faces, coming back to the same house, and going to your room which has your pictures on the wall, etc., etc., is a very different experience from living in a new hotel room or in a new city every other week, and then going to a new office, finding new people. And so for you also, it takes time to get used to the surroundings and get to understand how to make friends in a new situation, sort of, right? So wo ek challenge hai. And then there is how your clients perceive you, or how do they think about somebody coming into almost like accelerate a certain project, or like if you were to take how a lot of people put it, tell me how to do my job, right? Or something like that. So I think there could be some tricky situations, but mostly kya hota hai, right? I feel, as you said, managements who get in consultants know that there is a problem to solve, and it comes down a lot to the communication within those companies of why this is being done, right? So that is one. And then the second is how we approach it also, right? So it should not, like, it's not helpful to go in all guns blazing all the time. Ki ye change karo, ye change karo, ye change karo, ye change karo. It's also about being able to understand the people you're working with, understand ki, what are the challenges that they are facing to do this, and hence somebody, you need to come in to help and specifically help on easing those challenges. Ki acha, like data processing is a challenge. Okay, let us do this quickly and give it back, right? Being able to go to the market and do research of 1,000 customers and come back is a challenge, because right now we are, bottlenecked on doing a sales meet, and we have to do X number of conferences. So bandwidth ka constraint hai, right? So we come in and supplement that bandwidth. You'd be able to do a bunch of market research, understand insights of the market, and come back and say, acha dekho, we spoke to these folks, and these are the 3-5 things that are coming out, jo may be interesting, and then talk with that client and say, okay, how do we now make this into an idea? Next kya karna hai? Right? So it's about the approach also that you take, right? And I think I've also been super lucky. Most of the clients that we've worked with have been welcoming, and almost at the end of the project, you feel like you're a part of that company also, right? Ki, birthday celebrate kar liya, you go out for dinners multiple times in a week. तो वो सारे चीजें, because as a consultant, तुम शायद किसी city में हो जहाँ पे तुम किसी को नहीं जानते, right? And so these are the people you meet at work, and so it also becomes important to build some connections there so that you also can remain like slightly sane, right, about the work that you're doing. But sitting in a city in a new room every week, not necessarily getting all the food that you want to eat, that's becoming painful also.
किस टाइप ऑफ पर्सन को कंसल्टिंग में जाना चाहिए? मतलब एक होता है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल सूट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब। ऐसा हम लोग का इनहेरेंट थोड़ा इंक्लिनेशन भी होता है, किसी को इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है तो दे हैव टू बी गुड एट engineering aspects like math or coding or their own specific branch expertise they need to have. तो हम्म कंसल्टिंग में क्योंकि देखो कुछ तो है नहीं कि ऐसा एक डोमेन में एक तुम बड़े इंजीनियर हो तो कंसल्टेंट भी बन गए। तो कंसल्टेंट बनने के लिए किस तरह का पर्सनालिटी चाहिए होती है? हम्म नहीं, आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। वो आई जस्ट वांटेड टू कम बैक टू वो जो मतलब what I was saying earlier कि वो expert वाला जो path है, right? तो in terms of somebody who has done engineering for 10 years, आज वो roles आ रहे हैं, maybe मतलब I feel कि they're not as lucrative as something that like especially as engineer, software engineer would get 10 साल काम करके, right? तो maybe that is the reason why it is not very mainstream, but I feel वो roles भी exist करते हैं from a फ्रेशर पर्सपेक्टिव, राइट? कि वो जो लैडर हम डिस्कस किया उसमें वो जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा इज लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग एट मैकिन्जी एंड सो व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, लोगों के पर्सनालिटी टाइप्स का टेस्ट होता था एक एक्चुअली टू फिगर आउट कि मतलब व्हाट इज पीपल्स वर्किंग स्टाइल्स, कि हाउ डू यू लाइक वर्क विद पीपल, व्हाट इज योर प्रेफर्ड वे ऑफ थिंकिंग एटसेट्रा। तो उसमें I always thought that the certain type of people would be in consulting, would etc etc. But what we found was like there were a lot of people of very different personality types. तो काफी diverse होता है, तो it's not so much about personality types, but दो तीन skills होते हैं which either you want to develop or you already inherently are like you know on that path and you like doing it, तो वो तुम्हें ज्यादा बढ़ाना है। These people tend to enjoy the work a lot more. तो one of those things I think is this problem solving, analytical problem solving, and being able to do it like quickly. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मुझे बड़े वेग टर्म्स लगते हैं। मतलब हाँ ये ना, एक मुझे जब भी कोई ये बोलता है ना कि आर यू ए प्रॉब्लम सॉल्वर और लाइक योर, तुमको कुछ पजल देता हूँ, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज पता लगेगी, ये बड़ा वेग टर्म लगता है मुझे। तो थोड़ा थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो ना कि क्या मीनिंग क्या है, मतलब एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग से। पजल सॉल्व करना कैन नॉट बी अ मेजर ऑफ एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई एम नॉट सेइंग ऐसा कंसल्टिंग में पूछते होंगे, बट ऐसा बहुत सी जगह जब इंटरव्यूज भी होते हैं फॉर अदर फील्ड्स, वहां पे एक पजल पूछ के छोड़ देते हैं और पूछ लेते हैं हाँ तुम्हारी एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है। बट क्या कंसल्टिंग में कुछ और देख रहे होते हैं वो उस तरह का, जब जब वो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे होंगे, या व्हेन दे आर ऑब्जर्विंग व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल दे आर लुकिंग एट टू हायर, सो कुछ और देख रहे हैं उसमें, या जो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की वही यहाँ पे भी अप्लाई होती है? तो आई थिंक इंटरव्यू स्टेज पे यही अप्लाई होती है, राइट? अच्छा। एंड मेरे को मैं भी सोच रहा था कि यार ये इंटरेस्टिंग है। इंटरव्यू स्टेज पे ये इसलिए होता है क्योंकि आई थिंक दैट्स द फास्टेस्ट वे टू गेज एप्टीट्यूड फॉर दिस, कि मतलब तुम्हें करना अच्छा लगता है कि नहीं, इज बाय ड्रॉपिंग अ गेस्टिमेट कि हाँ मतलब पता करो कि एक प्लेन में कितने बॉटल्स ऑफ मिल्क फ्लाई कर सकते हैं, राइट? लाइक इट्स अ वेरी रैंडम प्रॉब्लम, बट वेदर यू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, क्या तुम्हें कि वो स्ट्रेन लगता है कि यार ये कैसे सोचूं, राइट? दैट अप्रोच इज व्हाट इज गेज्ड वेरी क्विकली इन एन इंटरव्यू, राइट? हाउएवर मतलब काम करने में थोड़ा फर्क है, राइट? तो काम करते वक्त इट इज नॉट अबाउट guessing or like doing puzzle solving. It is more about कि you're getting a lot of information. Okay, तो मतलब when you enter into let's say कि हमने बोला कि Amazon को कोई e-commerce में help चाहिए, right? कि let's say they want to figure out कि अपने warehouses कहाँ कहाँ पे होने चाहिए इंडिया में, right? तो ये एक real problem है। तो इसमें क्या होता है, एक तो तुम्हें बहुत सारा Amazon का कोर स्किल सेट, कि उनका शिपिंग कैसे होता है, उनके ट्रक्स कहाँ कहाँ से चलते हैं, उनके ट्रक्स किस टाइप के हैं, क्या क्या कैरी कर सकते हैं, कितने वॉल्यूम का है, ये सारा इन्फॉर्मेशन एक सेट होता है। दूसरा एक सेट होता है इन्फॉर्मेशन का कि इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ पे हमारे अच्छे रोड्स हैं,
ताकि डिलीवरी टाइम कम हो सकती है, कहाँ कहाँ पे वेयर हाउस नोड्स बने हुए हैं ऑलरेडी जहाँ पे हम रेंट कर सकते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अराउंड दैट। एंड द थर्ड थिंग इज कि मतलब जो लोग रहते हैं अलग अलग स्टेट में, वो लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, उनके लिए कितना पास होना जरूरी है वेयर हाउस की। मतलब मैं मेकिंग दिस अप, बट मतलब महाराष्ट्र में ज्यादा लोग मैगी खाते हैं, बट लेट्स से मध्य प्रदेश में पीपल आर ईटिंग मोर फ्रेश वेजिटेबल्स। तो व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ डिजाइन यू नीड फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ओवरवेलम हो जाता है, right, in terms of what all you get, and you are going and meeting teams, you're getting this information also कि हाँ यहाँ से एक एक्सेल मिल गया, यहाँ पे एक इंटरव्यू कर लिया। तो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर वन। आई थिंक सेकंड थिंग इज, given that you are also new to that situation, you have to be able to very quickly go back, see कि मतलब बाकी कंपनीज ने क्या किया है, हमारे पास क्या टूल्स हैं अवेलेबल McKinsey के अंदर, फॉर एग्जांपल कि ये एनालिटिक्स लगा सकते हैं, ऐसे हम नंबर्स क्रंच कर सकते हैं, ये वो। तो यू नीड टू गो क्विकली एंड गेट दैट एंड कम बैक टू द सिचुएशन, राइट? तो एंड द थर्ड इज, मतलब इतना डेटा मिल जाता ना, तो यू कैन मेक 1500 डिसीजंस। तो मतलब आई कैन मेक एनी नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब इतना डेटा मिल गया कि मतलब अभी तुम बताओ कि मतलब तुम्हें वेयर हाउस लोकेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डू यू वांट मी टू टेल यू कि गाड़ियां कैसे चेंज करनी चाहिए तुम्हें, मतलब शुड यू गेट डिफरेंट ट्रक्स, शुड यू गेट डिफरेंट टायर्स फॉर दोस ट्रक्स, कौन से टायर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, यू कैन हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। तो टू आंसर विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व करने के लिए हियर आर द 5 थिंग्स वी एब्सोल्युटली नीड टू नो। तो इसके लिए ये एनालिसिस करना, तो वो शार्प रखना वो इंफॉर्मेशन का एनालिसिस, एंड बीइंग एबल टू देन गेट दैट आउटपुट आउट एंड गेट दैट नंबर एंड बी एबल टू से। तो मतलब they also call problem solving in 3 steps, right? So one is the data and getting the data in order and making sense of the data. Second is एक insight कि मतलब ये data मैंने देख लिया, मेरे को ये 4 ट्रेंड दिख रहे हैं डेटा में, तो ये एक इंसाइट हो सकता है, राइट? कि मैंने पता कर लिया कि मेजरली कैपिटल सिटीज ऑफ स्टेट्स के आसपास रखना चाहिए क्योंकि डिमांड ज्यादा वहां पे होता है, फॉर एग्जांपल, राइट? इट सीम्स लॉजिकल एंड इंट्यूटिव, बट मे बी दैट्स एन इनसाइट दैट यू गेट, राइट? एंड द थर्ड इज, फिर उस इनसाइट को 2-3 इनसाइट को मिला के हाउ डू यू मेक अ रिकमेंडेशन कि ये is what we should do, like this is the initiative we should take, here is the amount of money it will cost, and so if you put 5 initiatives down कि कितने का किसका कॉस्ट कितना है, कितना इम्पैक्ट है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज कि कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा, तो वो टाइमलाइन बनाना, तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट? अभी वो करने के लिए somebody really needs to love doing this, otherwise it becomes difficult, and hence people say analytical problem solving, right, is the first thing that you're looking for from somebody who wants to do consulting or somebody who enters. ओके, सो एनालिटिकल स्किल हो गया, राइट? उसके हाँ. अलावा क्या क्या हो सकता है? So I think second one is, and this becomes important more when you become slightly more senior, is client relationship building. So as I said, right, how do you enter into the client's office in the first day makes a lot of difference of how the project goes. Similarly, how you work with them, how do you understand ki what are their priorities, how do you understand ki what is the data they already have that we can use or leverage. तो मतलब again this comes to a very important question. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार most consultants come in, take the data that the clients already have and suggest back, कि ये करना चाहिए, right? बाहर के लोग आके मतलब they are taking our data only and then they are telling us कि what we should do, right? So it seems counterintuitive कि मतलब why should somebody get a consultant? Now what I heard somebody describing this very nicely once is that मतलब कोई आइडिया हमारे पास नया नहीं होता, like it's not, we are not domain expertise in this field, we are also not like some innovative thinkers कि मतलब suddenly scientist level idea आ जाएगा and we will change things, right? What we bring is an ability to be able to make sense of all of this data together and do it quickly and make it actionable कि मतलब हाँ इससे अभी next step ये करना है, right? तो ये process, if you think about the value it drives, the value it drives is not in terms of the initiative becomes successful, because a lot of times, let's say, and especially the sort of clients we work with, right, and their top
top tier companies in their own fields and in their own respect they are winners, right, of their fields. So usme they would anyway have done it, right? They would have anyway made it successful. What you are able to do is, instead of it happening in 6 months time because there was no bandwidth to run the program or to be able to quickly decide what is the next step, if you are suddenly able to launch it in 1 month, there's 5 months of revenue, or there's 5 months of cost saving, or this, so the real value you bring is in being able to do that quickly without really disturbing the rest of the business, right? क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि bandwidth constraint की वजह से when you need to focus on something that is really novel or exemplary, you might lose focus on core line of business. So the especially hence the management of the company also feel, no, we want our people to keep driving the core line of business कि वो अच्छे से कर रहे हैं, right? And we are winning in that field. Now we want to explore this, so let's get someone to come and pilot a quick project, experiment a little bit, etc. So uh, so that is like primarily how you think about the skill set around the client building. And then I also mentioned in that example only being able to do it a little quicker, right? And so being able to be street smart about कि हाँ मतलब what will work, how will I prioritize this, ये करूँगा पहले तो ये हो जाएगा versus पहले ये कर लेते हैं then figure out how to do this, right? Whatever, it's about prioritization, it's about being able to time it correctly such that you're able to hit market success at the right time. So वो hustle चाहिए रहता थोड़ा सा, which people also like, it ends up becoming sometimes longer hours for a lot of people also, because the work amount that you need to do is significant, right? Because you're learning so much and trying to implement something like that. So एक एनालिटिकल स्किल्स हो गया जो हमने देखा काफी सारी जगहों पे ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है. दूसरा ये हो गया कि क्लाइंट हैंडलिंग को थोड़ा कम्युनिकेशन से रिलेट कर सकते हैं. यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, और इंटरपर्सनल स्किल्स को वहां पे रिलेट कर सकते हैं, या कुछ और एंगल से देख रहे हैं हम लोग इसको? No, I think interpersonal skills is a good way to look at it. How do you talk, interact, understand, listening to people and understanding where they are coming from. Gathering data also through interviews, right? So listening becomes a very core skill set to be able to like, that person also said this to me. Today also I was looking at one, numbers chart and I found कि जो वो बोल रहे थे वो यहाँ पे दिख रहा है, right? Being able to make those connections comes from being able to listen and take notes, etc. Right? Proper that sort of interpersonal communication. Also, but I think client handling is about being empathetic to why are you solving this problem? Knowing your role in the system, being able to figure out what do I need to do to make this project successful? So and then handling the client in that way, right? Because in some cases, for example, you have to be telling what needs to happen, right? Almost saying कि ये 5 step है, this is what we have to do, we will follow this every day for the next X, right? In some cases you have to be learning, right? So in each situation, how are you able to respond कि तुम्हें क्या करना? You can't go in and be the same person from a like, especially if you want things to work well and be implemented well, you need to be able to be conducive to be able to handle different relationships differently. Because again, very parallel to the regular job that we were talking about, right? Most people in a regular job will have 5-6 teammates. Unhi ke saath you will deal with. Maybe teammates will change from time to time, and then you shift companies. Obviously, this changes, right? But you're in consulting, it's almost like you're changing companies every 3 months. So being able to like build those relationships outside of interpersonal skills also, right? Being able to relate to कि ये problem क्यों है, why is this challenging for you, and how can I help you? वो वाला aspect I think becomes empathy is a good way to capture that feeling. I think. ये सब skills सिखाता कौन है? Practice. On the job learning बुलाते इसको. तो ऑन द जॉब हो पाता है क्योंकि जब कोई एंटर कर रहा होता है पता भी नहीं चल पाता है कि ये होगा या नहीं होगा. अच्छा, तुम एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो, राइट?
हाउ वुड यू असेस कि उसमें ये क्वालिटीज तुम्हें नजर आ रही है? ये मेरा असेसमेंट थोड़ा स्क्यूड है हाँ। नहीं, एक हाइपोथेटिकल हाँ, नहीं नहीं, तो आई फील कि मतलब एक तो मतलब द प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट ऑफ इट वी टॉक्ड अबाउट, राइट, सम सॉर्ट ऑफ पजल सॉल्विंग और सम सॉर्ट ऑफ केस सॉल्विंग, कि तुम्हें डेटा दे दिया, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट. The second assessment that happens is almost like he two things. एक तो in the communication you're having with the interviewer, how are you communicating, how are you understanding these questions, etc. And so there's a large part of the interview which is not necessarily just like that case, right? It is just a conversation कि हाँ बताओ तुमने life में क्या किया है, what do you find interesting. And similarly it's not just one way, right? The interviewer almost expects you to say कि यार you should know, or you should ask me which area I work in, what is my current project or something like that. और फिर तुम उसके बारे में पूछो थोड़ा कि मतलब हाँ, try to get information from me कि मैं क्या करता हूँ, right? So those are the two back and forth conversation which helps people gauge the interpersonal skills. But outside of interpersonal skills also, when you ask somebody to speak about things that they have done in the past, right? When you look at how they, like, you can ask questions around how did you deal with this problem in your team, or if you had to suddenly downsize your team and had to let two people go, for example, how would you deal with a situation like that? And typically, like, especially like in colleges, like in my college, we had like people with years of experience, right? काम करके आए हैं. तो काम के situations में I feel a lot of this teamwork, etc., are past examples that people tend to probe. It's also about how do you motivate your team? What is your management style? कि तुम मतलब how do you like to work with somebody on your team, and तुम daily updates, are you a person who likes doing that, are you a person who slightly more hands off? तो वो वाली चीजें, there is no necessarily right answer. Everyone has their own style, and all of the styles work in the ways for individual people, right? But the answer is how you think about that situation. And because तुम, how you work with your teammates, how you work with your group mates, how you work with your friends is very similar to how you will work with clients also, right? You will go and meet new people and suddenly be asked to do something to help them, right? So those relationship building wale tenets, very tough in an interview, honestly, कि मतलब check करना. But I think you ask about stories in the past and try to figure out if this is person who will be good to meet a client and work with them, etc. However, like, because you asked me this question, मेरा spin थोड़ा different है, right? I find it very difficult, mostly मैं जब interview करता था, to gauge all of this in like half an hour, 45 minutes. So I used to see कि यार, will I be able to work with this person, right? Am I happy? Like, and I was also a manager. I was not hiring for like, I was hiring for my teams, right? Typically. So as a manager, I always would check कि हाँ मतलब can I work with this person? Am I confident to let this person go into a room of strangers and run a meeting? If I'm getting that vibe, then I used to feel हाँ सही है. And again, like, one important part of that is मेरे को लगता है कि you're with the client about like from 9 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening or so. But most of these consulting engagements are remote, so you're not going home to family a lot of times. So you end up staying with your team. You end up, staying in the same place, eating dinner together. Late तक काम चलता तो साथ में काम करो, नहीं कि रूम में बैठ के काम कर लो, right? So the second aspect is, can you have fun with this person? Will you enjoy spending time? I almost look at it like that when I'm hiring for my teams, right? कि ये दो तीन चीजें हैं. So because like if you have the sort of aptitude towards problem solving and you enjoy doing it, then your happiness what will determine कि मतलब how much you put effort into the right direction, right? So that is also something important that I look at. Because यार आधे घंटे में तो चेक किया मतलब किसी के पास टीम मैनेजमेंट स्किल्स है तो मतलब इट्स वेरी हार्ड. तो फिर यहाँ से ही एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू गेट इनटू कंसल्टिंग, राइट?
कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या मेजर प्रोसेसेस हैं जिससे यू कैन एंटर इनटू कंसल्टिंग, अगर हम उस पर फोकस करें तो? So I think, as we said, कि बीटेक और या अंडरग्रेड ओवरऑल के बाद वन ऑफ द प्री एसोसिएट रोल्स का हायरिंग होता है, एंड द सेकंड इज एमबीए के बाद. तो एमबीए में टिपिकली ये होता है कि यू आर जॉइनिंग एज एन एसोसिएट ऑन द टीम. तो इंटरव्यू, एज आई सेड, हमने ऑलमोस्ट इंटरव्यू की बात भी कर ली कि दो तरीके के होते हैं. एक तो एक केस सॉल्विंग इंटरव्यू बोलते हैं उसको, केस इंटरव्यू, जिसमें एक guesstimate या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, एंड यू हैव टू think about solving that puzzle, if I may. And this is second one is more of an interpersonal conversation जहाँ पे you have to represent who you are and your stories about what you find that you've done well, etc. in the past. तो वो दोनों के प्रिपेयर करने के लिए तो मतलब आई थिंक the second one is just being who you are, right, and being like थोड़ा सा prepared about questions that can come about you, but outside of that just try to be very natural about who you are. I think the first one is about solving problems and lots of them. So typically MBAs में क्या होता है कि 2-3 months before you do your interview season or placement season happens, तुम बहुत सारे केस स्टडीज सॉल्व करते हो. तो ऐसे ऐसे एक एक लाइन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिनको तोड़ के तुम्हें स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है, उसके एनालिसिस करनी पड़ती है हर पार्ट की, और फिर एक आंसर सिंथेसाइज करना पड़ता है कि दिस इज द रिकमेंडेशन, दिस इज व्हाट द कंपनी शुड डू. तो ये वाला प्रोसेस जो होता है, ये स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाते पर से, कोई सब्जेक्ट में नहीं आता ये. दिस इज समथिंग दैट यू मोर और लेस डू आउटसाइड ऑफ द करिकुलम, राइट, कि तुम स्ट्रक्चर करना सीख रहे हो, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना सीख रहे हो कि एक अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्या आई नीड टू लुक एट, उसका क्या डेटा है. टिपिकली यू हैव टू आस्क द इंटरव्यूअर. तो डेटा, कुछ डेटा दिया जाता है शीट्स पे, but a lot of times there is some information you want to find, market share क्या है, etc., etc., which you are expected to ask. So to know which question to ask also, it takes practice. It's typically muscle memory in terms of the process of doing it, but it needs to like people practice it a lot because it becomes intuitive to be able to do it, so that you can spend your time thinking about the problem and not about कि मैं स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक डाउन करूंगा या मैं कौन से क्वेश्चंस पूछूंगा. तो वो practice builds one part of that muscle, and the second part of that muscle is to be able to then take all of that information that you have and make thoughts out of it. So how do you prepare for this? Typically is like there are a lot of case books and aajkal YouTube videos also on how to think, how to do structured thinking, what are the different frameworks of thinking about businesses, etc. So wo ek good material hai to pick up and read and understand ki how do you think about thinking itself in a way. And the second aspect of it is then exposure to different types of companies, exposure to different types of industries. So read about ki matlab markets mein kya chal raha hai, why, like let's say that steel ke prices are dropping, so why is steel performance of steel companies dropping, right? Wo sort of sense of being able to correlate things that are happening, वो मतलब by being exposed to more and more industries. Typically what you find is कि मतलब how humans we function is, if we are exposed to a certain line of reasoning in the past, we tend to see that line of reasoning everywhere. Like let's play a small experiment, right? So suddenly now if you notice a JK tire showroom ka signboard, every time you take that road you'll notice it, right? It just tends to happen that वो pattern recognition humans में काफी intuitively आता है, right? So being able to structure problems is one such muscle, right? So you do it again, you do it like maybe 20-30 times over a course of 2 months, and some I know some people who do it like 50-100 times also because they just love doing it. So फिर it starts becoming a part of how you think and how you answer things. So वही है यार, मतलब that is one aspect of it. I think the second aspect of it which people like look at a lot is तुमने past में what is it that you've done that you really shine at, right? Like what and do you recognize that you really shine at it? कि and there is again, मैं word बोलूंगा तो बोलेगा बहुत vague है, but unfortunately that is the way it is. But people call it drive, right? कि what is your drive, or what is how do you drive yourself? How driven are you?
all of these questions are more or less the same, pointing to the same skill set, saying कि तुमने जो past में किया है, how much did you push to make it successful, and do you recognize what you did to make it successful? Do you recognize that success in it? You know, कि अगर मैं पूछूं, जैसे तुमने ड्राइव की बात की, then when you were preparing, what drive that you found for yourself that you would like to describe to an interviewer, or you did describe to an interviewer कि ये मैंने किया था? Could you just spend some time talking about it कि क्या वो drive थी? Were you able to recognize that drive for yourself? I think, and this is a story that we both are a part of. The one story I talk a lot about is running the first Ignis, right? Ignis cultural festival at IIT Jodhpur ka. So Ankit and I were batchmates, roommates, hallmates, everything all together over 4 years. So we ran, and of course ran the festival also together. So Ankit was the festival coordinator. I was running marketing. So Ignis is a cultural festival of IIT Jodhpur, and when we were in our third year, that was the first Ignis that we ran, and how we ran it from scratch. And you know, going from shop to shop and going from you know, restaurant to restaurant, trying to get some sort of sponsorship, trying to get artists to come, all of it we've seen, right? And I keep coming back to that story because for me it was something that we really wanted to do. We had a very strong opinion that ये successful होगा, and we pushed a lot for it. We saw a lot of downs, but we managed to get like it up and running. And I remember talking to someone recently also about this, saying, "Here today when I hear of the numbers of the sponsorship for Ignis and all, I'm like, wow." Because today I think at one point of time it is some higher number of lakhs, double-digit lakhs. When we ran the first Ignis, it was 12 lakh ka. So out of which like 5 lakhs was one sponsor. So 12 लाख भी मुझे याद नहीं है. You're just reminding me of a higher number जो मुझे नहीं लगता 12 लाख भी था. But that's what I tell people कि यार मतलब वो कराना was a big motivation for me. कि मतलब when like if I were to look back, and I still count it as one of the top success stories that has happened in my life, right? Because the experience of seeing so many people from so many states come in, and the festival being successful, and crowds dancing during a last pro night, and you know, just the memories that you have of it, and then obviously the culture that has continued कि आज तक भी Ignis कराते हैं कॉलेज में, just feels very unreal because probably the longest lasting baby of mine till now, no? कॉलेज टाइम पे क्या होता है कि यू नो इस तरह की भी चीजें बोली जाती है कि ये सब कहीं काम नहीं आता है, चुपचाप बैठो पढ़ाई करो. ऐसे भी ओपिनियंस आते हैं कि ये सब फालतू काम मत करो, या फिर यही सब करने में मत लगे रहो. सो does it really help? What is your opinion on that? Yeah, I think it helps in two ways, right? And consulting specific पहले बता देता हूँ और फिर generic बता देता हूँ. So I think consulting specific में again we have to figure like something like drive or leadership, or you want to figure something like how quick is this person on their feet. So these examples really help because these are where people are most passionate, and this is where you know that if it has to come out, it will come out here, no? Right? Again, in my case, it was this. There are multiple examples, right? So there is somebody who worked with me who was an Olympic swimmer, right? So her story was very much about how she grew up and why she liked swimming and what drove her to do that entire run, right? So of going and competing at the Olympics, that takes immense drive. It's at a different level. And similarly, there are people who are driven about academics. So it's about drive across different fields. मेरे case में it was about doing like these organizing festivals, building teams, that sort of thing was what I enjoyed doing, and करते करते I also probably like gained some skill in doing it. So talking about that was relevant for me. The second thing is इन सब चीजों करने में I feel the benefit you get is also you get to understand what you like doing, right? And especially so somebody who's in college right now, academics एक certain muscle develop करता है of
how you react to information, how you process that information, how are you under stressful situations like exams or quizzes, so on and so forth, right? There is a certain muscle that you build over that process along with capturing that knowledge. uh, and then there are other muscles about building teams and being able to get people together for a purpose. uh, if you want to put it a word to it, you can call it leadership, right? But it's more about getting people together, getting a common goal, and getting everyone to work in the best possible way towards that success. uh, Similarly, there is handling of finances for the festival. There is you know doing PR for the festival, which is like guest handling and like uh, prize ceremony, and just conducting the entire, orchestrating the entire processes within the festival. So बहुत सारी चीजें हैं. And when you go to work, especially as a consultant, you have to do very different tasks, right? So kahin pe you have to actually go and run a plant. uh, it requires a very different set of skills than being able to uh, do a lab, for example, right? But or to be able to score good marks in exams. So drive is in different fields, and what different fields can drive help across different activities that you do. And I'm sure this is true even in other jobs, right? ऐसा नहीं है कि this is purely related to consulting, though I've seen a large portion of that. Being able, like leadership and management, and being able to get a team to work together for a certain purpose, even if that is an academic purpose or that is a business purpose, is or it could be even a team purpose, right? कि हाँ मतलब we all want to go and go out for lunch on Sunday. वो organize करना is also something very helpful for the team in the long run. So I don't think any of these skills go to waste per se. The like स्कूल में बोलते कि ये सब मत करो, तो पता नहीं क्यों बोलते हैं, तो हमने तो किया, तो I don't know. We didn't listen maybe. So you did your MBA from ISB, right? Indian School of Business. मैंने ISB का नाम सुना भी नहीं था, मतलब कॉलेज से पहले. लाइक IIM का नाम सुना था, ज्यादातर IIM का ही नाम सुना था आई गेस. तो ये ISB, I think IIMs, FMS, XLRI, these are हाँ उस टाइम पे traditionally. यही बातें चल रही होती है. तो क्या तुमने IIMs के लिए ट्राई नहीं किया था? अरे क्या बताओ. तो मैंने कैट दिया था और देने की कोशिश की थी, बट मेरे बाल लंबे हुआ करते थे. Okay. तो मेरे को एंट्री नहीं अलाउ किया गया IIMs में. IIMs में तो entry क्या है? एग्जाम देते वक्त they said I did not look like my photo ID. तो उन्होंने मना कर दिया एग्जाम देने से मेरे को. तो फिर मेरे IIMs का उस साल का चांस हट गया. उसी Really, साल ऐसा हो सकता है? Who denied the entry? किसने डिसाइड किया कि तुम्हें नहीं जाना there was चाहिए? somebody at the gate of the school where I had to go and give the exam. तो तो वो मतलब लोग फोटो आईडी चेक कर रहे थे और उन्होंने बोला तुम ये फोटो आईडी वाले नहीं हो. तो फिर मैं क्या करता. मैंने 4 बार बोला सर नहीं हूँ. फिर पापा गए थे, पासपोर्ट लेके आए थे कि हाँ देखो पासपोर्ट भी है हमारे पास, कि हाँ दिस इज द पर्सन, बट दे वर लाइक नाउ इट्स टू लेट. तो मैंने उस साल कैट नहीं दिया. वेरी रैंडम स्ट्रोक ऑफ लक, राइट? एंड आई डोंट नो, बैड लक, गुड लक, बहुत बाद में पता चलेगा. बट तभी क्या हुआ था कि दिस वाज थर्ड ईयर में हम प्रेप कर रहे थे और कैट वैट देने की तैयारी कर रहे थे. कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था ISB का, जिसमें उन लोग एक नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लाइक पार्ट ऑफ देयर क्लास. तो ISB स्कूल है जो, लाइक फॉर दोज हु डोंट नो, 2 कैंपस है हैदराबाद में और मोहाली में. एंड दे आर ट्रेडिशनली, 2001 से ये कॉलेज चल रही है, ट्रेडिशनली नोन टू take people in who have 4-5 years of experience. So इसलिए a lot of people don't even hear about this, because as if you want to do your MBA immediately after doing your undergraduate degree, CAT is the easiest option in that sense to like study for and go to IIMs, which are good schools, and like XLRI, FMS, etc. तो ज्यादातर फ्रेशर्स और कॉलेज वाले लोग जानते नहीं है, क्योंकि 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए रहता है फिर उस कॉलेज में जाते हो. तो बट उस साल उन्होंने एक मतलब एक्सपेरिमेंट रन कर रहे थे हमारे 3rd ईयर में, और फिर 4th ईयर में वो उसका 2nd बैच था जिसमें मैंने अप्लाई किया था. तो आई वाज इन 2 second बैचेस, इज व्हाट आई वाज आल्सो थिंकिंग व्हाइल
couple of days back कि IIT जोधपुर के भी सेकंड बैच में थे और फिर YLP करके प्रोग्राम का नाम था, यंग लीडर्स प्रोग्राम। तो 4th ईयर में अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन मिल जाती है ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट यू हैव टू वर्क फॉर 2 years एंड देन यू हैव टू गो जॉइन द कॉलेज। तो तुम्हें पता रहता है कि हाँ ठीक है, मैं 2 साल के बाद मैं MBA करने वाला हूँ, एंड सो इन दोस 2 years यू ऑल्सो लाइक टेक अप अ रोल दैट यू कैन एक्सप्लोर। ऐसा थोड़ा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वाला रोल नहीं चाहिए रहता है इमीडिएटली, क्योंकि यू आर ऑल्सो श्योर कि मतलब 2 साल में MBA करना है। तो वो सेकेंड ईयर था उसका, तो दे केम एंड डिड अ सेमिनार इन कॉलेज, और उसके लिए एग्जाम देना था GMAT। तो हम लोग मैं तो कैट की तैयारी कर रहा था, अभी कैट देने दिया नहीं लोगों ने। तो फिर मैंने बोला कि इतना कुछ पढ़ लिया है तो कोई और एग्जाम दे देते हैं। तो आई अप्लाइड फॉर GMAT, आई गॉट अ गुड स्कोर ऑन GMAT। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ISB के लिए अप्लाई कर लेते हैं इस प्रोग्राम में। तो उस साल शायद मतलब was the second year of their program, and so then 2 of us from our college, Darshan and me, both of us got admits, and then 2 साल हमने काम किया अलग अलग जगह पे, and then we went back to ISB after that. So that was my story of discovering ISB also. But अभी I think over the last, अभी तो that was in 2013, तो last 8 साल में I think ISB has become slightly more popular also in terms of कि कितने लोग अप्लाई करते हैं etc. So ISB में is 1 year MBA, right? It's not Yes. 2 year MBA. Yeah. Unlike IIMs. So yeah, so ISB tries to be very मतलब following a very corporate way of MBA, if I may. Not a very, and so they were one of the first schools to bring case study based learning into classrooms. कि classrooms में पहले टेक्स्ट बुक्स होते थे और फिर टेक्स्ट बुक्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते थे etc. But most of the classes in ISB happen by taking examples of companies and explaining the concepts of the business world through what happened to them, right? So how do you understand merger and acquisition is you study examples of different companies का merger and acquisition, और उसके impact क्या होता है, benefit क्या होता है, risk क्या होते हैं, right? And so real world examples or sometimes fictional examples, but primarily oriented towards a scenario that is happening, and so then you learn your courses, economics ho ya financial modeling ho ya all of those around such examples, right? So they compress this into a year because again, from the school's perspective, a lot of people who are joining are working professionals, and so getting back to a job is important, right? मतलब अगर तुम 4-5 साल काम करते हो उसके बाद going and studying for 2 years and then getting a new job and starting again seems a little inhibiting also. So if it's a 1 year program, you can almost take a sabbatical और फिर come back. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्लास में जो एक कंपनी में काम करते थे, वहां से 1 साल का sabbatical लेके वापस ज्वाइन करने वाले हैं या नया जॉब खोज रहे हैं, तो it's only a 1 year difference between when they stopped working and when they started working. So I think traditionally अगर तुम कॉलेज के बाद you're going for an MBA, you also require a lot more time to get used to that business language and the business कि मतलब चलता क्या है कंपनी में, functions कैसे हैं. जैसे तुमने 4-5 साल काम कर लिया है या 2-3 साल भी काम कर लिया है, तो you understand a little bit more intuitively. तो जब तुम्हें कोई केस स्टडी मिलता है तो you are able to relate to it much easier, क्योंकि तुमने ऐसा सिचुएशन शायद देखा है अपने वर्क लाइफ में. बट कॉलेज से जा रहे हो तो दैट्स व्हाई IIMs हैव अ वेरी गुड 2 year प्रोग्राम, क्योंकि उसमें यू आल्सो नीड टू गेट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट वर्कड. Majority I think still in IIMs is people who are joining straight from undergrad. So वो context building requires an additional year plus building those relationships senior junior का. So बहुत सारी अच्छी चीजें होती है 2 year प्रोग्राम में. I think the 1 year program का benefit यही है कि you can get back to working a lot quicker, and so that appeals to a lot of people who have worked for 4-5 years. तो MBA करने का फायदा होता है? टफ क्वेश्चन पूछ रहा है तू. तो नहीं, I think in the traditional sense of going to a school to learn something, उस सेंस में maybe 10 on 10 impact नहीं होता, because a lot of what you learn
only you will apply when you experience such situations. And मतलब ऐसे situations तो मतलब you learn about a lot of things, but then when you go into work, it's a very specific set of examples of things that you need to navigate, etc. Right? So direct, like if I learn mechanical engineering and going and doing a mechanical engineering job में जितना impact होता है from a curriculum perspective, I think 10 on 10 impact तो नहीं है. But I think what a lot of people, and I also believe, is the biggest impact of doing an MBA is two things. One is this entire networking and getting to know a lot of people. Classes बहुत diverse होती हैं, right? People come from very different fields to MBA. तो तुम्हारा world view का exposure बहुत बढ़ जाता है, right? So you have somebody whom you are working very closely with in your group, who's from design background, or somebody who's from an arts background, or somebody who's been a journalist, right? Or somebody who's been a swimmer, for example, right? So ये वाले backgrounds के साथ काम करना and actually doing a project, getting to know them, etc., is just increases the way you think about situations. And managers in that sense is a lot of situation handling, right? To be able to figure out key situation में क्या होता है. And more exposure and more worldview is only helpful to be able to say कि ये कौन सा type का problem है, and where is the other person or the other thing coming from, etc., etc. I think the second is the people whom you meet. And एक साल में तो कम टाइम ही लगा हमें, 4 साल भी कम टाइम लगता है कॉलेज में, विद एक साल भी कम टाइम लगा फॉर श्योर, to enjoy with them and to have fun, etc. But I think Indian MBA colleges में एक बहुत strong network culture है of staying connected after graduating, alumni, connection with both the college and the effect of एक सिटी में है, बैंगलोर में मीटअप कर रहे हैं एग्जांपल, और डिफरेंट इवेंट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉब्स के लिए फॉर एग्जांपल. तो वो सारे चीजों का आई थिंक इज अ मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट इन द करिकुलम इटसेल्फ. बट मेरे से पूछना शायद दैट इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज मेरे को तो इंजीनियरिंग का करिकुलम भी वैसे ही लगा. Keeping consulting in mind, so if I ask the same question, MBA करने का क्या फायदा है कंसल्टिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मुझे क्या लगता है एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि मैं अप्रोच करूं कैसे, लाइक मैं जाऊं कैसे कंसल्टिंग कंपनी के पास में, क्योंकि कंसल्टिंग कंपनी तो MBA कैंपसेस में ही आ रही होगी. तो कोई और तरीका भी है कंसल्टिंग कंपनीज को अप्रोच करने का? या तो what ends up happening is कि यार most consulting companies में there are the organization sizes बहुत बड़ी नहीं होती. Like compared to other companies that come on campus, the overall company का size in consulting is typically smaller. कि मतलब 500 से 1000 लोग पूरे इंडिया में like एक कंपनी में काम करते हैं, compared to like शायद मतलब कोई स्टार्टअप में भी आजकल मतलब स्टार्टअप which has been running for maybe 5 years, उसमें भी मतलब 1000 लोग तो होते ही हैं, राइट? और बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा, जिसमें ज्यादा रोल्स होते हैं कैंपस में एंड ऑल्सो आउटसाइड कैंपस, लिंक्डइन पे एक्सेट्रा, उनके ऑर्गेनाइजेशन साइजेस ऑल्सो लार्जर होते हैं. तो प्राइमरली MBA टेंड्स टू बी कि मतलब मेजॉरिटी हायरिंग वहीं से होती है. थोड़ी सी एक्सटर्नल हायरिंग होती है अप्लाई करने से, मतलब वेबसाइट पे एक्सेट्रा, बट अगेन वो काफी माइनॉरिटी होता है ऑफ एंट्री. एंड देन अगेन वी स्पोक अबाउट बाकी रोल्स कि तुम अगर एक्सपर्ट हो किसी डोमेन में, तो वो काफी हायरिंग हो रही है आजकल. तो वो मतलब लैटरली अप्लाई कर सकते हैं लोग 4-5 साल एक इंडस्ट्री में काम करके उस इंडस्ट्री के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करने के लिए कंसल्टिंग में काफी आजकल हायरिंग हो रही है. क्योंकि इवन कंसल्टिंग कंपनीज आर डूइंग, वी अगेन पहले बात किया था ना हमने कि कंसल्टिंग पहले एक इमेज होता है कि मतलब स्लाइड्स बनाते हो और फिर स्लाइड्स दे देते हो और काम खत्म हो जाता है, राइट? अभी के डेट में कंसल्टिंग इतना चेंज हो चुका है कि यू आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद द क्लाइंट एंड यू आर एक्चुअली रनिंग मे बी सेल्स और ऑपरेशंस या ऑपरेशंस विद इन अ फैक्ट्री, एंड यू आर हेल्पिंग देम एक्चुअली ड्राइव इम्पैक्ट इन रियल स्केल, राइट? तो उसमें डोमेन एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. तो consulting companies are recognizing that and hiring a lot more for expert practice also laterally. But yeah, from a fresher associate wala jo route perspective hai, I think MBAs is one primary route. Secondly, the reason why this also is a good match, दोनों साइड से ये मैच होता है, is क्योंकि कोई MBA खत्म करते हैं ना, तो if let's say मैंने 2 साल काम किया था,
तो मैंने 2 साल सेल्स में और सेल्स इंजीनियरिंग का जो बाउंड्री था उसमें एप्लीकेशन इंजीनियरिंग बोलते थे, उसमें काम करता था मैं। तो मेरे को उस चीज का एक एक्सपोजर था। अभी एमबीए में यू लर्न अबाउट बिजनेस टॉपिक्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। अभी ऐसा नेसेसरली मेरे को ये नहीं पता होता कि अगला रोल मेरे को कौन सी इंडस्ट्री में चाहिए, राइट? तो उस सेंस से गेट गोइंग फ्रॉम एन एमबीए इट्स अ गुड मैच टू गो टू कंसल्टिंग आल्सो, क्योंकि फिर तुम 3-3 महीने में अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग फंक्शन, रोल चेक, यू कैन ऑल्सो गेज कि हाँ मतलब व्हाट इज इट दैट आई एम एंजॉइंग, मेरे को किस में मजा आ रहा है, मेरे को कौन से में करियर दिख रहा है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इट्स अ गुड मैच बोथ वेज। I would also say कि मतलब at a later stage, or अभी I've left consulting a year back, a large part of the life that consulting has, which is traveling longer hours, constantly being in different cities, and not having like a home base, मेरे लिए तो it started affecting कि I would want to come back to the same home, and I want to be the same city over a long period of time. So that also tends to happen a lot more from like younger people from college who are excited to like explore कि हाँ बहुत सारे cities में जाएंगे। तो वो मैच दोनों साइड से होता है, राइट? कि जो एक्सपेक्टेशन है कंसल्टेंट से एज वेल एज जो एमबीए स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन है, वो दोनों का अच्छा ओवरलैप एमबीए में होता है। इसलिए आई फील कि काफी मेजॉरिटी हायरिंग फॉर एसोसिएट रोल एक्सेट्रा हैपेंस फ्रॉम द स्कूल डायरेक्टली ओनली। So a lot of traveling, right? Working at different places. और इसके अलावा जैसा तुमने मेंशन भी किया कि बहुत कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं कंसल्टिंग फर्म में। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें 10,000 एम्प्लॉयज रख लिए हैं। तो एक बहुत ही सेंसिटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसल्टिंग इज, जिसके बारे में बहुत बात भी की जाती है, दैट इट लीड्स टू बर्न आउट इवेंचुअली। तो हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू? आई थिंक बर्नआउट डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग एंड हाउ ऑफन यू गेट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर वेरी हाई इंटेंसिटी। तो हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, टाइम टू टाइम मिलते हैं तो ठीक रहता है, बट कंटिन्यूसली तुमने 6 महीने इंटेंस प्रोजेक्ट्स कर लिए तो फिर बर्नआउट इज अ रियल थिंग दैट पीपल सी, राइट? द सेकंड थिंग इज अबाउट कि व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क, राइट? तो you tend to see that people who really enjoy that aspect of the work, they enjoy hustling longer hours initially, etc., etc., tend to do well. That being said, I don't think that is like the only route to it, right? So initially maybe I was also doing this, like पहले 1 साल में मैंने शायद काफी लंबे लंबे दिन काम किए हैं, and did multiple travel, काफी burnout का feeling induce होने वाला था, राइट? But फिर I met like people who didn't do it, and so I found a good way to like navigate around कि कौन से प्रोजेक्ट्स में पिक करता हूँ, हाउ डू आई बैलेंस आउट कि छुट्टियां कब लेता हूँ, बिकॉज वरना द थिंग विथ, एंड दिस इज one aspect of consulting, and this is true with any service industry, right? कि you are working on the demands of the customer and you are serving the client's interest, right? So if there is a project going on, typically you don't tend to take holidays in the middle of that. You tend to work through the project, and then you need to be able to manage to take like a good break. तो मैं almost हर intense project के बाद 1 हफ्ते का छुट्टी ले लेता था, right? Because I can control कि मैं next project पे कब जाऊंगा, तो और कौन सा वो प्रोजेक्ट होगा, to some अच्छा, extent I can. हाँ, अच्छा तो ऐसा हो सकता है यू कैन चूज योर प्रोजेक्ट्स? इज इट you इवन can. पॉसिबल? It is fairly common because obviously given that you are cycling so quickly between projects, uh, it becomes important कि मतलब you are not like doing work that you don't enjoy doing, फिर तो तुम छोड़ के चले जाओगे, right? Like that way it's like a fairly fast moving role also. And by the way, this does tend to happen, right? If you see the average tenure of somebody in a consulting firm, it is maybe 2.5, 3 years. There are people who stay for 25 years, but typically it is 2.5, 3, 4 years that people stay. I left in with less than 5 years as well. So
it's a fast paced role. Some people really enjoy it and they really thrive in that environment. मेरे को ऐसा लगता है कि managing the balance between that high paced role and the interesting work is important. There is a lot of focus आजकल on this aspect क्योंकि mental health and balance during especially COVID times, even without the travel, people were working the same number of hours, right? So then that leads to even more burnout. मैं तो at least like, time to time I used to be like, हाँ ठीक है, now for 1 hour I'm driving to the airport, then I'm flying on a flight, मेरा airplane mode पे phone है, right? So time off कभी कभी तो मिल जाता था, but during the pandemic especially, and with the entire focus, the good focus on mental health and employee wellness etc, अभी consulting में काफी focus आ गया है on trying to maintain that good balance between people enjoying work and working so long that they start burning out. But again, and this is my personal opinion, is that over a period of time I wanted to be more stable, right? And you can say that I got burnt out, you can say that I had epiphany around what I wanted to do next, but यही था कि I think I wanted to figure out कि यार मतलब, and the pandemic was also a very strong reminder for me कि life is short, तो कुछ and to be truthful, right, then I never expected कि मैं 5 साल consulting में रह लूंगा. So suddenly it was a wake up call for me कि यार हाँ मतलब actually I've been here for almost 5 years, but let me try and figure out what I want to do next and what I want to do differently, right? So my strong opinion is that finding that balance is hard, and but some people do manage it, right? And you see people who've been in consulting for 20-25 years and all, and they are not burnt out because they found a way to be able to manage that level of workload along with balance and like other things that they like to do. These are also typically the fittest people in consulting. So I was going to ask how do you maintain fitness in a job like consulting where you are traveling most of the time, तुम खाना भी बाहर खा रहे हो, right? एक जगह पे तुम फिक्स भी नहीं हो, right? ऐसा नहीं कि डेली जिम जा रहा हूँ मैं इसी प्लेस पे एंड सुबह 6:30 बजे इस प्लेस पे मैं जिम जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता. तो अपार्ट फ्रॉम ओवरलोड, मेंटल ओवरलोड, जहाँ मेंटल फिटनेस भी एक पार्ट है, फिजिकल फिटनेस कैसे मेंटेन की जा सकती है इन कंसल्टिंग? यार मतलब मैं तो कंप्लीट रॉन्ग एग्जांपल हूँ ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए. तो आई डिडंट डू अ वेरी गुड जॉब ऑनेस्टली, एंड आई डिडंट गिव इनफ फोकस टू इट. बट दैट बीइंग सेड काफी लोग कर लेते हैं यार, एंड मैं हमेशा इंस्पायर रहता हूँ उनसे कि किसी भी सिटी में जाओ, दे विल हिट अ जिम, या वो रोड पे रनिंग चले जाएंगे या वो होटल में स्विमिंग कर लेंगे. पीपल वुड मेक टाइम फॉर इट, राइट? एंड typically I feel it's a good way to also like release some of the stress from working. When you're exercising and you're doing that, it allows you to get time to think about the rest of your day or to like get energized for the rest of your day. So मैं तो नहीं करता था, so I am not I struggled with that aspect of balance for sure. But I think काफी लोग कर लेते हैं, and मेरे को तो लगता है कि काफी इंस्पायरिंग है कि you can wake up in any city and you can be like हाँ जिम चलते हैं. मैं तो अभी बैंगलोर में बैठ के 1 साल से I am trying to do that still, and it's a question of I think character more than ability to do it. But I think working out definitely brings a lot of that balance, and hence I said, right, people who end up staying for 20-25 years, you typically find that उन लोग काफी फिट है. हम लोग सोचते हैं कि यार उन लोग कैसे कर लेते हैं. तो जब इतना लोड चल रहा होता है, there might have been incidents that kept you going and saying कि यार आज तो बहुत अच्छा काम किया है, और किसी ने कुछ बहुत अच्छी बात कही है, and you know that's what made me like my job, right? तो ऐसा कोई एग्जांपल है? अरे मतलब आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल चाहिए रहते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं. अदरवाइज सी अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया कंसल्टिंग के बारे में, इट फील्स लाइक अ रियली टफ जॉब, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज स्टिल काफी लोग करते हैं, काफी लोग करना चाहते हैं, अप्लाई भी करते हैं, तो कुछ है.
वो I think is best described by 2-3 things, right? और मेरे लिए ये 2-3 चीजें काफी important थी from a day to day perspective. एक है working with clients and teams, right? So I really enjoyed working with people and smart people across within my teams and the clients, right? So interacting with new people, interacting about new industries, working with them, building new relationships, and ensuring that everyone is happy in this ecosystem, right? And happiness comes from project going well, कुछ रैंडम बॉटलनेक्स आ गए कुछ रोकने के लिए तो उनको हेल्प कर दो some other like so conferences happening at the same time to be able to provide additional bandwidth to be able to support them and to make sure that their life is easier as well. So with both clients and with teams, building that balance so that the whole team that is working together is happy was something that मेरे को बहुत मजा आता था. So I derive my happiness from that. So that kept me going because when you're in a room with smart people, and especially most of the times people who are smarter than you, एक अलग learning experience है because and when people are exchanging ideas, एक जुगलबंदी sort of चीज हो जाती है, right? Ideas पे. So you can actually see things evolving from very core, random ideas people wrote on a chip to something actually working in a factory. वो process and happening quickly is like a really exciting thing when you see people work together to do it. I think the second thing that काफी energy drive करता है is around success of the project, right? तो तुमने जो काम किया to be able to see it to fruition very quickly, right? Typically, and I'm seeing this now in my current role. When you drive something operationally, the challenges that you face in doing that, the period of time it takes to drive success is consistently like longer than in consulting, right? Because again, in consulting, you're giving sharp recommendations, you're trying to make decisions happen at different levels. So the success that comes out of that just transitions very quickly across the organization because a lot of this is like management leadership led. So you're able to see that translate very quickly. And matlab, there was one example, of course, there was this company we were working with जो मतलब अगर मैं उनके sales के लिए project करना था to increase their sales because they were in a debt and they were going to struggle to repay that debt, right? And then the company would have to shut down. So in such a situation, when you are under the buck, वो sales operations drive करना, वो teams में वो energy लाना कि हाँ नहीं, because morale of the teams you are working with is lower, right? क्योंकि उनको भी पता रहता है कि company is not doing very well, etc. So to drive that, to actually get those sales results, to be able to get the company to survive for 1 year, and now today that company is doing so well. उस company में जो success होता है, you feel part of that, right? Of course, like doing it yourself, and this is something that a lot of people say about consulting, right? वो aspect of having skin in the game missing है थोड़ा सा consulting में. But that being said, you also see so many of these stories that substitutes a little bit for that high level of ownership, if I may, right? Or the third thing I feel which used to give me a lot of joy is independence, both in the work I am doing as well as outside of work within the company only. For example, what I can pick and choose as my priority area, कि मेरे को जैसे मैंने बताया कि I can choose certain types of projects. मैंने काफी मेरे projects marketing और sales में किए, तो that is work that I enjoyed. मेरे को early recognize हो गया कि हाँ ये काम करने से मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा type का काम अच्छा लगता है. So when I picked that work and I continuously kept doing things in that and learning more and more about that, मेरे को उसमें से भी एक joy derive होता था. So these are the things that keep you going. And then outside of that, there are लोग काफी बात करते हैं इन चीजों की perks, कि तुम flight ले रहे हो, right? All of the things that were like after a point of time become too much, right? कि हम balance और burnout की बातें कर रहे थे. In the first few years of the job, they are wonderful. कि तुम अलग-अलग cities देख रहे हो, तुम अलग-अलग hotels में रह रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, flights लेके जा रहे हो या trains लेके जा रहे हो अलग-अलग plants में. And वो sort of exposure also, right? I don't think one particular job could have got me. मैं टायर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट में काम करके तुम ऑल्सो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हो एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे फील्ड पे जाके सेल्स कर रहे हो,
right? That sort of exposure in one role just was very exciting for me, क्योंकि मेरे को I could also feel कि हाँ, what is it that I enjoy doing, what am I good at. बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस भी आंसर हो जाते हैं थोड़े थोड़े तरीके से. तो हाँ, तो those are the things that kept me going overall in consulting. Nice. So what would be your parting words to somebody who's trying to get into consulting? I would say बहुत एक्सपोजर मिलेगा, बहुत एक्साइटिंग होगा लाइफ, हमेशा कुछ नया होते रहेगा. जैसे एक एग्जांपल मैं लोगों को देता हूँ कि in most roles, right, there are certain times of like high stress, रिलीज करना है या कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होना है या अभी सेल्स का मंथ एंड आ रहा है, राइट. There are these times which keep you going, like excited, and then you decelerate a little bit. Consulting sometimes feels like it is constantly from project to project. You are in those phases of that company जहाँ पे कुछ intense हो रहा है, right? तो बहुत hectic लगता है, but at the same time बहुत enjoyable और exposure वाला journey होता है. Constantly कुछ ना कुछ is happening, right? Whether it is good or bad is another question, but something is always happening. So I feel that is very enjoyable, but at the same time, especially like in the sort of times that we are living in, where work from home is happening, etc., to be very mindful of like the time you spend with family, with friends, outside of like just work itself, right? Because इतने सारे मीटिंग्स हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतना सारा इंटेंसिटी ऑफ वर्क है कि you, and I am guilty of this for a large part of the first 2 years, you just get lost in work कि हाँ मतलब काम करते रह जाते हैं, and then you forget about like कि हाँ बाहर भी लोग हैं. But yeah, those would be like parting words for me. Like it will be an enjoyable ride, but also be mindful of like the things happening around outside of that. काफी सारी बातें हो गई अबाउट कंसल्टिंग, नॉट अबाउट कंसल्टिंग. बहुत सारी चीजें जानने को मिली हमें कि क्या कंसल्टिंग होती क्या है. सबसे पहले तो ये जानने को मिला, और कंसल्टिंग में जाने के लिए करना क्या चाहिए, किस तरह के लोग जा सकते हैं, और कोई एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेड भी नहीं है जो जा सकता है कंसल्टिंग में. एनीवन कैन गो इनटू इट विद सर्टेन बेसिक स्किल्स. बहुत सारी बातें हैं जो और करनी है. मे बी विल कीप इट फॉर लेटर, because I know your life has been much more than just consulting. So we'll keep on touching different aspects of it. So with that note, thanks so much for coming to the show, taking out time. See you later again. Loved it, man. Too much fun.